Hi everyone and welcome back. Welcome to our Nestjs course. So we have already covered a lot, right? I think we have covered 33 different videos, but I got one feedback from one of the audience. He was saying like our examples are not properly provided. So what I did, I spent a lot of time और ये repository के अंदर I put all the examples day wise. Just like video is like day 1, day 2, day 7, day 10, day 20. So I created a repository. This repository is already shared है सबके साथ. And then I created a videos like this. Day 10, day 11, day 12. जो भी code snippet है, all are inside these. So now there is no issue with the providing a code snippet or all these things because all these things are properly shared. If you see what all things are already there, like this is the workspace and inside apps folder, आपको सब कुछ day wise sequentially arrange किया मैंने. Middleware, Nestjs Swagger, request validation, then exception handling, middleware, interceptors, how to manage environment, then Nestjs scope, then custom providers, validations using DTOs, how we can validate the request payload, then Swagger basic auth, how you can validate, how you can protect your Swagger URL, then custom filters, custom pipes, interceptors. This is the custom filter. So we also talked about pagination, filter-based sorting and searching APIs and how to define DTOs for them. Then configuration management and how we can. So recent videos I created for the logging. लॉगिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. आई मीन आप सिंपली विंस्टन यूज़ करो, मॉर्गन यूज़ करो जैसे एक्सप्रेस में यूज़ करते हो. सिमिलरली नेस्टजेस ऑल्सो प्रोवाइड लाइक डीबग यूज़ कर सकते हो, नेस्ट विंस्टन यूज़ कर सकते हो आप. और पीनो इज एक्चुअली एक्सटेंड द एग्जिस्टिंग नेस्टजेस लॉगर. तो ये बहुत सारे हमने डेमोज किए हैं. नाउ आई विल बी वर्किंग ऑन सम ऑफ द फीडबैक विच आई हैव रिसीव्ड. फीडबैक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें सामने आई कि दैट आई शुड बी covering a little slow on some concepts. If you are already aware about that concept, then you can skip the video, that is fine. But covering some core aspect of Nestjs with little bit in depth, तो वो वीडियोज हम कवर करेंगे बिफोर वी टॉक अबाउट डेटाबेस. तो डेटाबेस पे बात करना ही दैट्स अ मेजर आस्पेक्ट रिमेनिंग. लाइक ओके Nestjs with the drizzle, type ORM, SQLize, and maybe connecting to directly database and using these different ORMs, defining the model schemas and all, like NoSQL, Mongoose or DynamoDB, PostgreSQL. तो ये हमने ऑलरेडी लॉगिंग पे डिस्कस कर लिया. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दीज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स. अब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स में आई गॉट अ फीडबैक कि आई नीड टू कवर दिस async module, like how we define the async module, what are the different type of custom providers, Nestjs provider scope, custom providers, value providers, and how we are using async providers. All those things and how we are actually writing query parameter, path parameter or body, what all different ways we can validate all those things. So I will be working on those feedback part also. So feedback part में ही पहला topic था, just explain more about the request, response, all these existing decorators which we are using here and there. So let's talk about this particular structure. Like when the request come from the client side, so what we do, we write a controller, and inside controller we write get, put, post, delete, patch. अब request object जो request handler जो हम define करते हैं controller के अंदर, there we can use @get, @put, post, right? And inside any method we can use all these custom decorator like request, response, next, session, param, query, body. अब query parameter use करना है तो I will be using @query. @body if I want to get data inside a body. Param if you are passing any path parameter. Session, user, IP, or if you want to pass some custom header. अब मुझे custom header pass करना तो I will be using @header and you can specify the name. उसके अंदर header का नाम लिख दो. Redirect if you want to redirect. When somebody hit your API, you redirect it to another place. तो वो सब चीज़ें, ये सब important aspect है जो हम plan कर रहे हैं cover करने के लिए. So here these are the different things, like starting from controller to the router, and then हम controller के अंदर methods क्या क्या define कर रहे हैं. And in all those methods, what all different decorators we are using, like @query, @body, @request, @response, next, session, all these things. So to understand that simple thing, मैंने एक simple architect diagram draw किया है. उसमें कुछ नहीं है. We are sending a request from client
and that request is going. And now what all things you can write inside that hand controller के अंदर जो method define करते हैं, you can access headers, you can access body, you can access query parameter, path parameter. I mean that depends on आप API क्या बना रहे हो, like HTTP get, put, post, delete, patch. You might be passing कि डेटा मुझे query parameter में पास करना है, headers में पास करना है, path parameter में पास करना है, body में पास करना है. If you are writing some like HTTP post, मतलब कि मुझे request body में डेटा भेजना है. And Nestjs use @body decorator जो एक्सट्रैक्ट करता है डेटा से. लाइक रेस्ट यू कैन ऑल्सो यूज क्वेरी पैरामीटर, पाथ पैरामीटर यूजिंग @query @param फॉर पाथ पैरामीटर. देयर आर अदर डेकोरेटर्स ऑल्सो लाइक रिक्वेस्ट हो गया, रेस्पॉन्स, IP. You can also define your custom decorator. So let's see all these things. So first what we will talk about is how you can extract headers. अभी हमने @header की बात की. You just define a controller method और उसके अंदर आप @headers and you can actually access a particular header or you can access all the headers being passed. So line number 14 में क्या कर रहे हैं हम? Simply headers, record key value pair. That means all the headers which you are passing, I should be able to access them. Similarly, you can just define any other like headers test और यहाँ पे आप individually argument भी pass कर सकते हो. Okay, I just want to access this particular header only. Okay, so this header, what this header is doing? Header is actually you can specify all the headers which you wanted to access, or it's already having record. That means all the headers will be accessed. Otherwise, you can specify a particular header name like cache control. यहाँ पे user agent है, cache control है, authorization है, XAPI token है. मतलब header name you are deciding. So that header name can be anything. There are some user defined headers like user agent, cache control. और यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई कस्टम हेडर जो आप क्लाइंट से भेज रहे हो, ब्राउजर से भेज रहे हो या API जो भी कॉल कर रहा है, XAPI की, XAPI टोकन, origin, ऑल दीज हेडर्स यू कैन सेंड. तो अपना सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हाउ टू एक्सेस हेडर्स इन द कंट्रोलर. सो इट्स वेरी सिंपल. यू जस्ट राइट header. Either you can access a particular header like user agent, origin, XAPI token, or you can access all the headers and you can specify @header n number of times for accessing an individual header being passed. Like in this line 37, 38, 39, you can specify the headers multiple times. So similarly, we'll be talking about how you can send data in the body, how you can send the query parameter using @query, how you can send data in the path parameter using @param, right? Let's see that in the coming videos.